Hello, hi, namaskar. Welcome to Pristine IAS. So, this is a class regarding answer writing. How to prepare a good answer that will reward you good mark. This is the objective of the video. कि आमे केमिति गोटे good answer लिखिवा that will reward us with good mark. Because examiner पाखरे the only way that the examiner will evaluate us is based on the copy that we will write. आमे जो कॉपीटा दबा the evaluator will evaluate that copy, and based on that it will be decided whether we will be selected or not. So during prelims the strategy is different, and during mains it is totally a different game. We will break down the answer writing so that we will learn how to write a good answer. So let's start. How to turn a raw note ingredients into beautiful structured exam answers. Where you will get this raw note ingredients, that is the notes. That may be the master note that we are providing, that may be any reference material that you are referring, maybe any textbook, whatever it may be. These are raw informations or data that is present with you, that you need to beautifully structure it. तुमको इटा ठीक अच्छी ब्रिक्स सीमेंट सब मिलला सीमेंट आउ जहाँ भी मार्बल्स everything is given to you. Now your work is to join all these bricks को use करियो सीमेंट मार्बल देन स्टील्स व्हाटएवर सबू जिनस को यूज करके तुम गोटे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर गोटे बनायर अच्छी फाइन गोटे ब्यूटीफुल तुम स्ट्रक्चर बनायर अच्छी so that that structure will be evaluated by the evaluator. Evaluator देखिबनी कि तुम पाखरे कौन ब्रिक्स थिला कौन सीमेंट थिला ताकू तादर मतलब नहीं. सी फास्ट देखिबो कि तमरो स्ट्रक्चरटा ब्यूटीफुल कि नहीं. यदि स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल अच्छी तापर सी जीवो ठीक अच्छी एठी को सीमेंट यूज हेची ए मार्बल जोटा लगैचो से मार्बलटा कोठु आछि देन द इवैल्यूएटर विल डेवलप सम इंटरेस्ट देखिबो जेता दूरରୁ देखिकी लागिला कि ये ठीक अच्छी कोन गोटे स्ट्रक्चर एंदी बना हेची आई एम नॉट इंटरेस्टेड. तो यदि प्रथमରୁ से इंटरेस्टेड नहीं ताल तुमको से को बेसिस रे से तुम मार्क दबो. So the very basic thing to get a good answer or to get a good mark, that beautifully structured answers. Structure हमको बनने को पड़ियो भलो. Obviously भलो बनने गले हमको भलो क्वालिटी मार्बल दरकार भलो क्वालिटी सीमेंट ब्रिक्स everything we need. Coming to the extraction cheat sheet. This will tell you how you will start the answer and how you will end the answer. Bodies रे कौन आमे लिखिवा everything we will discuss one by one. First thing is hooks. Hooks माने कौन गोटे तुम वीडियो देखिया स्टार्ट कलो YouTube वीडियो तुम देखिया स्टार्ट कलो ठीक. लेट्स सपोज सेटा एजुकेशन वीडियो नुहे तुमको गोटे एंटरटेनमेंट वीडियो देखुछ तो तुम फास्ट गोटे 10 सेकंड देखुछ यदि भल न लागले ताले तुम नेक्स्ट वीडियो को पळौछ. बट यदि तुमको से फास्ट 10 सेकंड रे हुक्स मिली गला ताल तुम कौन करियो कंटिन्यू करियो से देखिया पे. ट्रेलर कहीं आछछ मूवी रो ट्रेलर रे तो सेही जिंस ही देखांदी ना. ट्रेलर रे तुमको सेही जिंस देखांदी कि बहुत कम टाइम रे तुम जानिबा को पाइयो कि ओके दिस थिंग्स आर देयर तो ठीक अछि आई विल डिसाइड कि मते जिबार अछि कि मते जिबार नै. दैट इज द ट्रिक दैट यू विल आल्सो यूज हियर. हुक से कौन यूज करियो क्रिस्प डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स स्टैटिक मैट्रिक्स और इंडेक्स जहाँ भी तुम लगेबो
दैट इज फास्ट 2 लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन जोटा को पढ़िला परे जी तुमर इवालुएट करियो कॉपी ताकू लागिवो कि ठीक अछि कॉपी रे किछि मटेरियल अछि मते जोटा पढ़िया दरकार ताकू बांधी रखियो कि ताकू बाध्य करियो ठीक अछि ए पिलाटा लिखिछि तो मते एबे पढ़िया को पड़िबो तुम गोटे एसे गोटे लिखिल गोटे एसे रे तुम अनेक्डोट देकी स्टार्ट कल यदि अनेक्डोट ताकू पसंद आसला ताले से पूरा पढ़िया को चेष्टा करियो जे ताकू अनेक्डोट ही बेकार लागला कि तुम लिखिछ बहुत सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करतो से प्रथम रु बुझी जीवो कि ना यार ए पिलार माने नॉलेज रो कमी अछि कि ऑब्वियसली नॉलेज ही कमी अछि नल तो भल भल लिखता तो फास्ट गोटे पैराग्राफ पढ़ला पर से तुम एवरेज मार्क देकी पळेबो सो तबु सब बेले आमे एमिति हुक्स यूज करिवा एमिति ता डाटा दबा एमिति ताकू डेफिनेशन दबा सो दैट से लागियो कि नहीं पिलार नॉलेज अछि पिला ताकू बढ़िया रिप्रेजेंट करछि सो मु भी डेलिबरेटली कॉपी को पढ़ी भल मार्क देवी जदि मते भल लागला आगु भल इनफॉरमेशन मिलला ऑब्वियसली भल मार्क देवी सो दैट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट बाय द स्टूडेंट to the evaluator that evaluator will go through your entire copy बुझिपाल जे ट्रेलर भल लगुच लोक मैंने मुवी देखा जी मुवी देखला मे भी कह ठीक अच्छे बेकार थिला व्हाट एवर इट मे बी बट जे ट्रेलर ही खराब अच्छी तुम मुवी जिते भल बन था तार लोक ही आसबेनि लोक सीना आसला कहे ना भल अच्छी खराब अच्छी तो लोक आसपा ट्रेलर जमी भल दरकार तुम आंसर को इवाल्युएटर रीड करने तुमको भल हुक्स दरकार जोटा कि तुमको भल डेफिनेशन जमी कहले क्रिस्प डेफिनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड जहाँ पचार आम रिप्रेजेंट करवा बाय सम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हो पारिबो किछि इंडेक्स हो पारिबो किछि मैट्रिक्स हो पारिबो दैट विल बी द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ आवर इंट्रोडक्शन तापर सेकंड ला एविडेंस एविडेंस आमे कोन दबा आमे गोटे रिपोर्ट कहउचंदी कि गोटे आमे फैक्ट को आमे गोटे जतले किछि दउचंदी कि आमे किछि फाइंडिंग देखउचंदी वी शुड ऑलवेज राइट द कमिटी नेम्स को कमिटी को रिपोर्ट रे जिंस आस्तिला ताकू आमको लेखिकी एविडेंस देवा पड़ो एविडेंस बिना जदि आम कथा हवा ता लगे कि हावारे कथा चलची कथार ग्राविटी ना सो वी नीड टू गिव द नेम ऑफ कमिटी मे बी इंडेक्स रैंकिंग जो आम हंगर इंडेक्स कथा कहवा कि आम जो हंगर मालन्यूट्रिशन कथा कहवा आम लिखिपर कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया रैंक 102 अच्छी तो दैट विल कनेक्ट कि इंडेक्स इंडिया रैंकिंग से अच्छी कि जो आम पासपोर्ट कथा कहवा कि किसी भी तुम कह जेंडर इनइक्वालिटी कथा कहवा तो जीआईआई रो रैंक अच्छी से रैंक आम कहवा फाइन कि इकोनॉमिक्स मैट्रिक्स किसी आरबीआई डाटा हो पारे वर्ल्ड बैंक रो हो पारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो हो पारे आईएमएफ रो हो पारे तार डाटा देन एनएफएचएस दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बर्तमान एनएफएचएस 6 चलची ओके 5 और 6 मिसिक अच्छे तो तार किसी आम डाटा दे पारिबा दैट विल एक्ट एज ए एविडेंस दैट जोटा आमे कहउचंती आमे जहाँ आर्गुमेंट करचंती दिस विल एक्ट एज द एविडेंस ऑफ आवर आर्गुमेंट दैट इज substantiating okay आम substant that will substantiate the core arguments in the body third la visuals it is I am saying from my personal experience I was a assistant professor in university जेतबेले आमे कॉपी चेक करू इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी फैकल्टी ओके सबुठू जदि गोटे प्रोफेसर लाइफ रो दुख होला दैट इज द चेकिंग ऑफ कॉपी इट इज वेरी मोनोटोनस वेरी बोरिंग वर्क आमे कॉपी उठेलु जदि कॉपी रे किछि भलो देखा जाउनी भलो प्रेजेंटेशन नहीं भीतर तुम जिते जिनस लिखि थाओ तुमको एवरेज मार्क ही मिलिबो जदि गोटे पिला बढ़िया रिप्रेजेंटेशन करची बढ़िया प्रेजेंटेशन देची स्पेसिंग अच्छी जोटा आम पढ़ा चाहूँ ताकू अंडरलाइन कराई किसी गोटे कौन फिगर यूज कराई देन द मार्क विल बी इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली सो विजुअल प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन एनहांसिंग योर मार्क दैट इज द स्कैनेबिलिटी माने तमे लेट सपोज तुम लिखुच पेशा एक्ट विषय तुम लिखुच जड़े पूरा पाराग्राफ करके लिखला आउ जड़े पेशा एक्ट करके ओके एमती हब एंड स्पोक मॉडल बनैला तार फीचर सब लिखला तो ऑब्वियसली
दिस विल लुक अट्रैक्टिव भल देखा ताकू जेहेतु आम एमती हब एंड स्पोक मॉडल करथिबा तो जी कॉपी इवालुएट करियो ताकू भल देखा कहे ठीक अच्छे मत यूट्यूब पढ़ीदेले मत पॉइंट मिलगला मत भितर जावा दरकार नहीं आ जोटा तुम चाहूच कि इवालुएटर पढ़ू ताकू जदी बॉक्स भीतर रखियो इट इज माने इवालुएटर 50% काम कमीगला सी तुम इमेज कि तुम फिगर देखियो जोटा तुम फिगर रिप्रेजेंट करछ तापर तुम बॉक्स भीतर जहाँ लिखिछ सेटा से पढ़ला हुक्स तक मिल जाइए सी तुमको भल मार्क देकी पळेबो सो वी नीड टू बिल्ड माइक्रो डायग्राम्स ताको आम आगु प्रिपेयर करिया पड़िबो आइदर आम नोट्स को देखिकी प्रिपेयर करिया कि मॉक जेतल दबा सेतल किसी प्रिपेयर करिया वर्कफ्लो साइकल्स रीजनल आउटलाइन मैप्स जेतल आम किसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कथा कहउचंदी जेतल आम लेट सपोज ओडिशा आउ छत्तीसगढ़ महानदी विवाद ऊपर कहउचंदी वी विल डेफिनेटली ड्रॉ ए मैप जब आम मैप ड्रॉ करके देखई परिबा द विजुअल रिप्रेजेंटेशन विल बी बेटर कि जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट आम कहउचंदी कि पढ़ी फिजियोग्राफी ऑफ ओडिशा तो जो फिजियोग्राफी आम देखुंत ताकू आम ओडिशा गोटे मैप करके आम जब रिप्रेजेंट करवा दैट विल गिव यू गुड मार्क एंड लास्ट इज सॉल्यूशन कौन सॉल्यूशन दैट इज वे फॉरवर्ड इन बुलेट्स तुम जहाँ सजेशन दौच ताकू बुलेट लिखो नीति आयोग पॉलिसी स्ट्रेटेजी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस सब बेले तुम जो आंसर अच्छी तार सॉल्यूशन देकी ताकू खत्म कर जो कनक्लूड करना पॉजिटिव रिमार्क रे कनक्लूड कर सॉल्यूशन ओरिएंटेड हवा दरकार तो किसी क्वेश्चन अच्छी तार कनक्लूजन सब तुम तार सॉल्यूशन ओरिएंटेड लिखो पॉजिटिव होपफुल देखो एमती ना कि ना यहाँ कराले बहुत खराब हम एमती लॉसेस होमती ना आमको पॉजिटिव नोट रे सॉल्यूशन ओरिएंटेड दिस इज द प्रॉब्लम एंड वी कैन टैकल इट बाय दिस वे देन इट शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग कंस्ट्रक्टिव हवा दरकार जो प्रॉब्लम अच्छी तार सॉल्यूशन ओरिएंटेड आमको कंक्लूजन लिखा पड़ो देन डिकन्स्ट्रक्टिंग द डायरेक्टिव्स एग्जाम रे जहाँ जहाँ डायरेक्टिव अच्छी ताको आम बुझा पड़ो एनालाइज द डायरेक्टिव्स से कौन पचारची से डिस्कस पचारची ना एनालाइज पचारची ना क्रिटिकली एनालाइज पचारची फाइन जहाँ से पचारची से अनुसार आमको कि एक्सप्लेन पचारची तो आमको डायरेक्टिव बुझा पड़ो से अनुसार आमको आमर सॉल्यूशन सॉरी आमर आंसर को फ्रेम करा पड़ो एवरी प्रॉम्प्ट कम्स विथ ए स्ट्रक्चरल इंपेरेटिव मैच द डायरेक्टिव वर्ड विथ परफेक्ट फ्रेमवर्क इमीडिएटली बिफोर राइटिंग योर फर्स्ट वर्ड आंसर लिखा आगु तुम आगे बुझ सी कौन पचारची डिस्कस पचारची एनालाइज पचारची क्रिटिकल एनालाइज पचारची एक्सप्लेन पचारची बुझिला परे आमको से अनुसार फ्रेमवर्क करके लिखा पड़ो इफ द नोट्स आस्क टू क्रिटिकली एनालाइज और द क्वेश्चन पेपर पचर क्रिटिकली एनालाइज करने योर ड्राफ्ट आउटलाइन मस्ट फॉलो ए बैलेंस्ड थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस अप्रोच तीन टा जिनस रहा थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस दुटा को मिसेकी थेसिस एंटीथेसिस मिसेकी आमको लिखा पड़ो क्रिटिकल एनालाइज जदि कही तादरे भी आमको डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट देखार अच्छी केते पॉजिटिव लिखार अच्छी केते नेगेटिव रखार अच्छी प्रोपोर्शन को भी आमको मेंटेन करिया पड़ो मैप द थीम ब्लूप्रिंट ओके OPSC questions map directly to syllabus sections locate theme inside your master note database आमे जो भी तुमको मास्टर नोट दउछु से मास्टर नोट रे आमे थीम आई ताको ब्रेक डाउन करछु से गोटे थीम तुम पढ़िबो से थीम रे तुमको एवरीथिंग विल बी देयर डेफिनेशन अच्छी डाटा अच्छी फैक्ट्स अच्छी ताको सपोर्ट करे में फिगर्स अच्छी एवरीथिंग इज देयर क्विकली okay jot down 3 logical subheading on your margin to structure the response before committing permanent ink मान लिखिबा आगु तुम थीम को बुझ आ थीम रे कौन पचारची कौन सबहेडिंग हम सेटा प्रैक्टिस करिकी तापरे माने गोटे ब्लूप्रिंट करिकी तापर तुम लिखा स्टार्ट कर ब्लूप्रिंट करिवो केमिति हबो एग्जाम हॉल हमको मन मन से ब्लूप्रिंट करिया पड़िबो केमिति करिवो दैट इज कम्स ओनली विथ प्रैक्टिस जति तुम प्रैक्टिस करथिवो से अनुसार तुमरो क्वेश्चन देखिवो क्वेश्चन बुझिलो तुम मन ब्लूप्रिंट हो गला ठीक अच्छे एतिक सबहेडिंग मत लिखार अच्छी देन यू स्टार्ट राइटिंग फाइन
तापर कौन है द हाई इम्पैक्ट इंट्रोडक्शन अवॉइड जेनेरिक फिलर्स क्वेश्चन जहाँ पचार मत कि मन पड़नी से क्वेश्चन को रिफ्रेज करके लिखिदेली ठीक पचार खारवेल इज ए ग्रेट रूलर तापर पचारे कि माने तांकर डिस्कस द कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ खारवेल तो आमे जेनेरिक आंसर लिखिया कि खारवेल इज ए ग्रेट किंग ऑफ ओडिशा he has done several things to flourish the culture of Odisha. It is generic. हमको to the point answer लिखे अच्छी. Do not waste time on writing empty conceptual statements. Start with direct fact. कौन से करथिले डायरेक्टली तुम लिखो. Statistical baseline ने quote official indices like नीति आयोग रो SDG index हे गला NCRB National Crime Record Bureau तार डाटा हे गला जोटा तुमरो आंसर रे रहिबा कथा सेउटु तुम स्टार्ट करो. Institutional credibility open directly with relevant constitutional articles or landmark case precedents. लैंडमार्क किसी जजमेंट अच्छी किसी केस अच्छी से वाला जिनस भी हम स्टार्ट कर परिया सो दैट आवर डाटा शुड लुक क्रेडिबल. एटी मु जस्ट गोटे एग्जांपल देछि ओके माइक्रो कंट्रीब्यूशन नेशनल एंड ओडिशा कॉन्टेक्स्ट दैट इज रिलेटेड टू एमएसएमई बोधे एमएसएमई तो देखो ये आम सबुथिंग माने सब जिन लिखी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जीएसडीपी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड डेमोग्राफी कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट जदि से पचारा कि एमएसएमई रो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सहित कौन लिंक अच्छी तो यू कैन स्टार्ट विथ हियर ओनली सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर अकाउंटिंग ओवर 34.6 करोड़ रजिस्टर्ड जॉब्स ऑन उद्यम पोर्टल बुझिपारछ तो एठू तुम डायरेक्टली तुम आंसर स्टार्ट कर परियो. यदि पचारा कि तार कंट्रीब्यूशन कौन अच्छी तुम कंट्रीब्यूशन लिखिपर तार एक्सपोर्ट रे कौन कंट्रीब्यूशन अच्छी ठीक अच्छे एक्सपोर्ट रे कौन तार कंट्रीब्यूशन अच्छी प्रोडक्शन रे तार कौन कंट्रीब्यूशन अच्छी एम्प्लॉयमेंट तार कौन कंट्रीब्यूशन अच्छी सो जेनेरिक न लिखिकी से जहाँ पचार से अनुसार आमको आमर आंसर को फ्रेम करिया पड़ो. ये लिखाई ना केते परसेंट से कंट्रीब्यूट कर जीडीपी को फाइन तो आम यू स्टार्ट कर एमएसएमई कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 31.1% ऑफ इंडिया टोटल जीडीपी and drive 35% 4% of total manufacturing output तापर एक्सपोर्ट भी तुम लिखिपर एम्प्लॉयमेंट लिखिपर जी दरकार अच्छी तुम से लिखिपर सो यहाँ कौन है यहाँ जेनेरिक नुह ये एग्जाम बुझे कि पिलाटा पढ़ी आसी पिला पाखे डाटा अच्छी पिला जिन को बुझी एंड परफेक्टली जिन को एनालाइज करने चेष्टा कर दैट इज द थिंग दैट विल गिव यू दैट वन एक्स्ट्रा मार्क और मे बी 1.5 एक्स्ट्रा मार्क व्हिच विल मेक्स योर यू विल बी इन द रैंक लिस्ट. तापर आमे देखिबा द कोर बॉडी आर्किटेक्चर बॉडी केमिति आमे देखिबा तादर कोन आम रहिया दरकार फर्स्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑलवेज प्रेजेंट योर आंसर यूजिंग क्लीन सबहेडिंग मैचिंग द प्रॉम्प्ट्स की डिमांड एस्पेक्ट्स देखो तुम एठी देखो एठी सब जिनसर ठीक एठी सब जिनसर आमे सबहेडिंग देछि ना ठीक एटा माइक्रो कंट्रीब्यूशन गोटे नेशनल ओडिशा कॉन्टेक्स्ट रे चलछि एमएसएमई रो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी गोटे सबहेडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गोटे सबहेडिंग कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट गोटे सबहेडिंग तो सब आंसर तुमको सबहेडिंग देकी ता तळे डाटा को लिखिबा को पड़िबो. दैट इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर दैट यू नीड टू बिल्ड. हाउ यू विल बिल्ड ओनली वन आंसर प्रैक्टिस. व्हाट प्रैक्टिस प्रैक्टिस मॉक प्रैक्टिस से सब धीरे धीरे डेवलप हो जो 90 डेज अच्छी ट्राई टू राइट 17 नॉट 17 70 मॉक 70टा मॉक और एटलिस्ट 60टा मॉक ता तळु गले कथार्ता करिया कथा नै कटथ्रोट कंपटीशन जेहेतु चलची एतिकी आंसर राइटिंग इज ए मस्ट. पील आर्गुमेंटेशन माने P stands for point, E stands for evidence, E for explanation and L for link. पील ठीक चार्टा जिनस तो मन रखियो गोटे हला पॉइंट गोटे हला एविडेंस गोटे हला एक्सप्लेनेशन गोटे हला लिंक. नेवर मेक एन एम्प्टी असर्शन विदाउट एडिंग एग्जैक्ट डाटा बैंकिंग सॉरी बैकिंग कौन है कि आम कहवा कि वुमेन रो द क्राइम एगेंस्ट वुमेन crime against just one second crime against women is on rise. Good answer.
गोटे हला आज पर एनसीआरबी report, as per NCRB report, there is an increase in crime against women against women by 5% in last decade. ठीक तुम एनसीआरबी को ईयर डाटा भी तुम लिखिपर तो यहाँ देख ये किसी आम बैकिंग देले आम गोटे लिखिदे मन इच्छा स्टेटमेंट ये आम लिखले एनसीआरबी रिपोर्ट कि एनसीआरबी को ईयर से लिखिदी पार ताकू जब आम लिगाली बैकिंग करम आंसरटा सेल्फ सफिशिएंट लगे आउ सी एविडेंस जेहेतु दूसरी एग्जामिनर को लगे ठीक अच्छे पिला जो लिखी डाटा दैट इज बैकिंग बाय द गवर्नमेंट अप्रूव्ड और ऑथेंटिक डाटा तो क्रेडिबिलिटी बढ़ियो एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ले तुम मार्क भी बढ़ियो सो ऑलवेज ट्राई टू add बैकिंग जहाँ लिखुंट डाटा बैकिंग दवाक आम पड़ो फाइन देन हाई स्कैनेबिलिटी break text into brief readable bullets instead of massive dense academic paragraphs लंबा 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 paragraph न लिखिकी बुलेट्स पॉइंट रे सार बॉडी सब बेले बुलेट पॉइंट रे लिखिबो इंट्रोडक्शन तुम लिखिबो गोटे शॉर्ट पैराग्राफ कंक्लूजन लिखिबो गोटे शॉर्ट पैराग्राफ बॉडी सब बेले बुलेट रे लिखिबो चेष्टा करियो सो दैट कम वर्ड रे अधिक पॉइंट तुम जेहेतु लिखि परिबो यू विल गेट गुड मार्क्स जे पढ़िबो ताकू भी इजी होबो गोटे एठी तुम डायग्राम भी गोटे रखिथिबो ठीक अच्छे डायग्राम गोटे रखिलो तुम सब बुलेट पॉइंट लिखिलो तो जे पढ़ुची ताकू भी खुशी लगे से तुम डायग्राम को देखला तुम बुलेट्स पॉइंट रे जहाँ तुम पढ़िया को चाहूच ताकू तुम अंडरलाइन कर रखियो कि तुम बॉक्स भीतर रखियो से देखला ठीक अच्छे ये डाटा फाइन से तार पढ़ला मार्क देकी पढ़ेला तो दैट इज हाई स्कैनेबिलिटी तुम कॉपी से लेवल माने हवा दरकार कि ताकू माने जे इवैल्यूएट करूची ताकू बहुत सारा मेहनत करिया को न पड़ो देन the 1.5 mark visual edge. What differentiate average candidate from consistent toppers in the strategic integration of quick visual breaks? Practice 30 second sketch. ये जो second एटा सब कराई ना एटा सब 30 सेकंड तुम करिया पड़ियो 30 सेकंड not more than that. गोटे पचारला कि malnutrition nexus or malnutrition status of India or Odisha whatever it may be. तो मालन्यूट्रिशन रे बेसिकली दीटा अच्छी गोटे अंडर न्यूट्रिशन गोटे ओवर न्यूट्रिशन बट क्वेश्चन सब मालन्यूट्रिशन से अंडर न्यूट्रिशन उपर कथबार्ता करती तो तीन टा कंडीशन हो पार आइदर स्टंटिंग हो पार आइदर वेस्टिंग हो पार आइदर अंडरवेट हो पार तो आम जदि एभा विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके देखीदेवा तार कौन कौन कंडीशन अच्छी देन इट इज इजियर एंड इट विल गिव्स यू एन एडवांटेज विजुअल एज जेहेतु अच्छी जी एग्जामिनर ताकू इवैल्यूएट करिया बहुत इजी हम जमी पचार ओडिशा स्पाशियल पोवर्टी डिवाइड तो पोवर्टी डिवाइड को आम दी प्रकार करदे गोटे कोस्टल पोवर्टी कोस्टल प्रोस्पेरिटी आ गोटे इनलैंड ट्राइबल पॉकेट ठीक मैंने दुटा को आम डिफरेंशिएट कर कि रीजनल डिस्पारिटी अच्छी गोटे जगह प्रोस्पर अच्छी गोटे जगह पोवर्टी अच्छी कि ट्राइबल पॉकेट रे अंडर डेवलपमेंट अच्छी से आम देखते तो ये डिस्ट्रिक्ट भी लिखिले ठीक आम ये एमपीआई डाटा भी देदेले ड्राइवर देदेले कहीं प्रोस्पर कहीं माने जी डेवलपमेंट हवा कथा कहीं से अचीव कर पारानी एति पढ़ला पर एग्जामिनर विल बी फाइंड ऑल ऑफ द आंसर से जहाँ खोजुला ताको एटी मिलगला कीप इट फंक्शनल नेवर ड्रॉ डेकोरेटिव आर्ट एटा तुम करिकी ओके छक्की शून्य लिखिकी किछि करिया दरकार नहीं जस्ट जेतिकी दरकार सेतिकी विदिन ए बॉक्स ड्रॉ करो आगु बढ़ डेकोरेटिव ऑब्वियसली टाइम नहीं सेति में तुम पढ़ी गल तुम पर टाइम नहीं न पढ़ी जाइए गोटे तुमको आसुची तुम कर जहाँ करे अच्छी stick to simple crisp flow diagrams that instantly summarize complex relationships ठीक अच्छी जहाँ जहाँ दरकार था ये दे देले नेक्स्ट आम जीवा conclusion that should be forward looking an administrator's conclusion should never merely summarize the problem it must resolve it with foresight and optimism solution based conclusion हवा दरकार at least optimism जे तुम सॉल्यूशन न दौच कि सॉल्यूशन दवा संभव नुह से जगह ऑप्टिमिज्म तुम देखेब जिते नेगेटिव टोन रे क्वेश्चन पचार था तार कंक्लूजन शुड बी ऑलवेज ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिस्टिक हवा दरकार
जहाँ प्रोब्लेम अच्छी ताको समराइज करके आम फेर थे लिखिदेले दैट कंक्लूजन विल नॉट बी ए वैलिड कंक्लूजन जो कि तुमको भल मार्क मिल तुमको एडमिनिस्ट्रेटर हिसाब से चिंता करिया पड़ो यू नीड टू रिजल्व इट विथ फोरसाइट माने दूरदृष्टि संपन्न व्यक्ति जने जेमती चिंता करे से भाया तुमको चिंता करिया पड़ो एंड यू नीड टू कंक्लूड इट विथ ऑप्टिमिज्म फाइन देन कम्स द इम्पोर्टेंट थिंग जोटा कि पिलांकर बहुत सारा डिमांड थिला कि व्हाट इज द रूटीन दैट इज प्रैक्टिस बाय द टॉपर कौन से करती ये तुम कौटी भी पाइबनी से कौन कर मटेरियल कलेक्शन रे टाइम वेस्ट कर लिखाई नो दे हैव द मटेरियल दे स्टडी द मास्टर नोट्स जोटा मटेरियल दिया होची से ताकू नेकी पढ़िबे रिवाइज करिवे रीड ए सिलेक्टेड कोर सिलेबस 15 मिनट 30 मिनट में जहाँ भी पढ़े पढ़िए राइट फ्रॉम मेमोरी से नोट पढ़ला पर ताकू बंद करके खाता रखिदेगी क्लोज योर मटेरियल एंड ड्राफ्ट डायरेक्ट आंसर इन 7 मिनिट्स ठीक तुम 30 मिनिट्स की 1 आवर पढ़ पढ़ला पर गोटे क्वेश्चन नब तार कॉपी बंद करके लिखा चेष्टा कर डिटेल्ड सेल्फ चेक आगे निजे चेक करियो कंपेयर द ड्राफ्ट चेकलिस्ट पैरामीटर साइड बाय साइड विथ प्रिस्टिन चेकलिस्ट आमे जो चेकलिस्ट दउचु ता सहित तमरो जो लिखिल ताकू चेक करियो एंड सिमुलेटेड मॉक एग्जाम्स दैट इज प्रैक्टिस फुल लेंथ मेंस मॉक अंडर द सिमुलेटेड एग्जाम कंडीशन जेमती एग्जाम कंडीशन तुम 3 घंटा रे बसिकी 250 मार्क्स लिखुच सेमिति मॉक टेस्ट रे बसिकी 3 घंटा रे 250 मार्क अंडर दैट प्रेशर अंडर दैट सिचुएशन यू नीड टू राइट गोटे थर बसिबो 3 घंटा रे एग्जाम सारिकी उठिबो तुम एग्जाम हॉल तो बाथरूम यूज कर ना 3 घंटा तो बस ना आराम रे पानी बोतल धरिकी बसिबो थरे बसिबो एग्जाम खत्म करके उठिबो जेमिति एग्जाम हॉल रे दिया जाए से बेले सेल्फ प्रैक्टिस तुमको करिया पड़िबो फाइन एंड द लास्ट थिंग दैट विल डिस्कस राइट टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस आमको सेठी काहा को इम्प्रेस करिया नहीं बिल्कुल वी नीड टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ ठीक अछि सो मेन स्पेसिफिक मॉक टेस्ट to evaluate how you are writing, what are the conditions to improve your mark, कोटी तुमरो प्रॉब्लम अच्छी वीक एरिया तुमरो कोटा स्ट्रांग एरिया तुमरो कोटा कहाँ पर काम करिया पड़िबो एवरीथिंग कैन बी फाइंड आउट by writing this mock test and to save time जेमती मु कहली कि एठी कोनोसी जगह रे मटेरियल कलेक्शन पे टॉपर दौड़नी प्लीज डोंट डू दैट मते गोटे आईएएस इंस्टीट्यूट से तार गोटे मिलला गोटे टॉपिक आ गोटे आईएएस इंस्टीट्यूट तार आ गोटे टॉपिक मिलला आ गोटे इंस्टीट्यूट तार आ गोटे टॉपिक मिलला एमती करी पढ़ले तमे जस्ट यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल जे कोनोसी जगह रे भलो मटेरियल मिलुची जस्ट टेक इट एंड स्टार्ट राइटिंग ठीक अछि जोटी तुमको मिलुची ओके दिस इज नॉट आवर ईमेल आईडी नॉट आवर वेबसाइट to get the notes or to join us I'm giving my number you just contact on that it is 7989778247 this is a generic session that we have taken how to write mains answer specifically आमे गोटे गोटे टॉपिक रो आंसर राइट करिकी मॉडल आंसर देकी तुमको बुझेबू को जगह रे कोन लिखियार अछि जेतिकी आमे टेस्ट नौचा आमे 36 टेस्ट आमे ऑलमोस्ट करेबू सो 36 टेस्ट रो तुमको वीडियो डिस्कशन भी मिलिबो सो दैट यू विल नो को जगह रे तुमको कोन इंप्रूवमेंट करियार अछि फाइन you will get all the materials you will get GS1 to GS4 along with essay तमरो जेमिति मु कहली दीटा काम थिला एठी भी से दीटा काम रहइबो that you need to revise आउ कोन मॉक दैट्स ऑल मॉक लिखिबो फीडबैक मिलिबो से फीडबैक को नेक्स्ट मॉक बेले ताको इंटीग्रेट करिवो जो फीडबैक थिला जो कमी थिला नेक्स्ट मॉक लिखिबो एमती करी करी तुमको 36 मॉक जेतल तुम प्रैक्टिस करिवो you will feel the difference तुम तो एग्जाम हॉल को जीवो with practicing 36 mock you will feel the difference
what is the your standard today, and how much improvement you have done. That will be incredible, and that will give you the result that you are aspiring for. ଏତେ ମେହନତ କରିକି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଯଦି କ୍ଲିୟର କରିଛ, that too with too much hurdle. କାଲି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ କି ୟୁ ଆର୍ ଟୁ ଲକି କି ତମେ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର କରିଛ, ପିଲାମାନେ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଫର୍ଟ ପିଲାମାନେ କିଛି କ୍ଲିୟର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବିକଜ ଅଫ୍ ଦେୟାର ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍। ଗୋଟେ ମାର୍କ 1.5 ମାର୍କ ମେ ବି 0.5 ମାର୍କରୁ କଟିଥିବେ ପିଲାମାନେ। ସବୁ ପିଲା ନୁହଁ, ଯୋଉମାନେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଯୋଉମାନେ ମେନ୍ସ ଆପିୟର କରିଥିଲେ ଇନ୍ 2024, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପିୟର କଲେ 2024ରେ, 2023ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପିୟର କରିଥିଲେ, despite that level of knowledge they would not able to clear the prelims। ତମେ ଯଦି prelims clear କରିଦେଇଛ, that is a golden chance for you to get a rank। ଯେହେତୁ ଏଥର ଗ୍ରୁପ ବି ର ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ତ କମ୍ପିଟିସନ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଟିକେ କମ ରହିବ, ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଏ ଜବ୍। ଆଉ କମ୍ପେୟାର ଏଇଟା ବିଲକୁଲ କରିବନି କି ଏଠି ନେଉଛନ୍ତି 8,000, ସେଠି ନେଉଛନ୍ତି 5,000, ସେଠି ନେଉଛନ୍ତି 3,000। ୟୁ ଜଷ୍ଟ କମ୍ପେୟାର ଆୱାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ଆମ ଟେଷ୍ଟକୁ କମ୍ପେୟାର କରନି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କମ୍ପେୟାର କର। ଯଦି ତମକୁ 3,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମଠୁ ଭଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମିଳୁଛି, ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଜଏନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ହ୍ୟାପି। ଆମେ 10,000 ନେଉଥିଲୁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଫର ଦେଉଛୁ, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ 8,000। 8,000 କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ ତମେ ଜାଣିଛ ଅଲରେଡି। ଆମେ କହୁଛୁ କି ଫୁଲ୍ ମାନେ ତମକୁ ମିଳିବ ଫୁଲ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମିଳିବ, 36 ମକ୍ ମିଳିବ, ଫୁଲ୍ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ମିଳିବ, ଠିକ୍। তোমার 5 to 6 ডেজে তোমার কপি ইভালুएट হব, এভরিথিং উইল বি ডন। ତମକୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ର୍ୟାଙ୍କ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ତମକୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତମେ 3,000 5,000 ଦେଇକି ଜଏନ୍ କରିବ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାଇଁ ତମେ ଦୌଡ଼ିବ। ଫାଇନ୍। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାଇଁ ଯେମିତି କହିଲି ନା, ଏଠୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିବ। ହଁ, ତା ସହିତ ଆମେ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ବି ଦଉଛୁ। ମଡେଲ ଆନ୍ସର ଇଜ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଅଲ୍, ସୋ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ବି ଆମେ ଦଉଛୁ ତା ଦେହରେ। that will also help you। fine, so take your decision wisely। तुम जो जॉइन करिया अछि यू जस्ट जॉइन। आमे जहाँ प्रोवाइड कर परिबा आमे कहलु, इट्स योर डिसीजन, तुमको जो भल लागुची जॉइन करो, बट इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, जल्दी ये सब काम कंप्लीट करिकी फोकस ऑन दिस थिंग्स। रिवीजन जेते जल्दी स्टार्ट करिवो, मॉक लिखिया जेते जल्दी स्टार्ट करिवो, दैट विल बेनिफिशियल फॉर यू। अलस भांगी की ना तो रिवीजन करिवो ना तो मॉक लिखिवो, अच्छी 90 दिन हे जिवो भाई हबनी। 90 डेज तुमको एमती देखु देखु पळेबो। फिर तुम एग्जाम थी 10 दिन, जाकि टेलीग्राम रे बसिकी फिर गोटे स्टार्ट करियो कोन, पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन, आउ 5 दिन पोस्टपोन हो जाओ, 10 दिन पोस्टपोन हो जाओ, ता चक्कर जो लास्ट 10 दिन थिवो सेटा भी पळेबो। प्रीलिम्स बेले होतला ना, पोस्टपोन हबो, एग्जाम घुंचिबो भाई ना। 90 डेज मिली ताको वाइजली यूज कले तुम 90 डेज आगु प्रिपेयर होगी बैठो, यू विल बी हैप्पी। एग्जाम हॉल को जीव, क्वेश्चन देखियो, आंसर लिखिकी आसीबो, कॉन्फिडेंस सहित रैंक मिलिबो। एबे तुम टाइम वेस्ट करिवो, तापरे लास्ट 10 दिन थिवो पोस्टपोन हो जाओ, जेंती पोस्टपोन हो गल 10 दिन तुम पूरा सिलेबस सार देकी कवर कर दबो। नो, इट विल नॉट हैपन। जे 90 दिन रे सारुनी 120 दिन रे भी सारिबो। पिलाने भी कहे सर आम लास्ट 30 दिन तो खत्म करदेलु, 30 दिन तो पढ़िलु, एग्जाम माने प्रेशर थिला कि रिजल्ट कौन हम जानलु, दैट्स ओके, ठीक अच्छे हो गला ना। एबे जो 90 डेज अछि ताको कहीं फेर खराब करछ, यूज दैट 90 डेज वाइजली। जा हो गला से हम आनी परिबा ना। 90 डेज इज एनफ फॉर दोज हु टेक वाइज डिसीजन। समस्त ପାଇଁ एनफ नुहे, तांको ପାଇଁ 900 दिन भी एनफ नुहे, 90 दिन तो कौन कहि पिलांग ପାଇଁ 900 दिन भी एनफ नुहे। जो माने सीरियस नुहंती, जो माने माने टेकिंग कौन कहबा कि किछि भी कथा रे से माने इन्फ्लुएंस हे कि कुआडे भी जॉइन कर जाउछंती, किछि भी कोर्स नै जाउछंती। फाइन, देखले गोटे 300 टका कोर्स मिलुछि सेटा जॉइन करदेबे, तापर 200 टका मिलुछि सेटा भी जॉइन करदेले, मटेरियल आनिक रखिदेले, मटेरियल माने कोन मटेरियल क्वालिटी नै पड़ला बेलू इच्छा होनी, विजुअल ग्राफिक्स बहुत सारे यूज होइछि, बट सेटा एग्जाम ओरिएंटेड नुहे, तो कौन करिया हम। एई बेला तुमको जो डायग्राम दियाला, दैट डायग्राम यू कैन रिप्रेजेंट इन द एग्जाम, बट मु ए जगह पूरा डेकोरेट करिकी पूरा माने 3-3टा पिलर करिकी पूरा कौन करता पूरा आहरी बहुत सारा जिनस देकी, बट सेटा तुमको एग्जाम हॉल कर परियो कि पॉसिबल नुहे ना। जेतिकी पॉसिबल, जेतिकी करहब ह्यूमनली सेतिकी कर। निजको कंपेयर करिकी ओवर स्ट्रेस करिकी
କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଆଜି ବି ମୁଁ ତମକୁ ରିଆସ୍योर କରୁଛି ଦିସ୍ 90 days you just give to ओके आमको ठीक अच्छे इफ यू कैन बिलीव अस यू कैन गिव टू अस अदरवाइज तुमको जो भल लगुच 90 days यू इनवेस्ट आउ से जगह एमती इन्वेस्टमेंट कर एमती तुम कमिटमेंट रहा दरकार कि 90 days तुम जमी रैंक नहीं पलैब नेक्स्ट प्रिलिम्स को तुम भरसा कर नेक्स्ट प्रिलिम्स कौन हम किसी भी कहीहबनी मे बी तुमको नेक्स्ट प्रिलिम्स तुम क्लीयर न कर पार ये तो तुम इंटरव्यू देकी सिलेक्ट है भी नेक्स्ट प्रिलिम्स तुम क्लीयर न कर पार बिकज प्रिलिम्स इज बिकमिंग टू मच अनसर्टन बहुत पढ़ला सिलेक्शन हम तार किसी गारंटी नहीं तो जदि तुम एथर प्रिलिम्स क्लीयर करके आस यू आर लकी इनफ आई वुड सजेस्ट कि 90 days को जिते भलरे हो पार से भलरे यूटिलाइज कर जदि निद गोटे घंटा कमेयर अच्छी कमे दियो 6 आवर गोटे दिन शो 7 घंटा दरकार नहीं तुम बड़ी 7 घंटा माने नहले न हो दैट्स ओके जे तुम 6 घंटे मैनेज कर 6 घंटा तुम दियो सो दैट 90 आवर तुम बंचो आ 90 आवर टेलीग्राम कि इंस्टाग्राम दवापे नुह 90 आवर तुम पाठ पढ़ा दवापे ठीक काली भी कहते आज भी कह बिकम लिटिल सेल्फिश यही पीरियडटा सेल्फिश हवा बहुत जरूरी बिकज दिस 90 days इज ओनली योर्स ठीक ये 90 days करदेव लोक मैंने कहे बढ़िया कला ये 90 days न कर पिला लोक मैंने आसी ताना मारे फेर सेल्फिश हो जाओ किसी फरक पड़नी भाई किसी फरक पड़नी निजपाई कर किसी असुविधा नहीं रूथलेस है प्रैक्टिस कर रूथलेस माने मु आज कही तो करी ठीक अच्छे मुझे थकी जाइए बट स्टिल आई विल डू ना कि मुझे शोपड़ी काली करी काली केबे आसबनी एबे अच्छी आम पाखे काली आसबनी सेल्फिश हुआ रूथलेस हुआ जहाँ दरकार एग्जाम कर दिस इज द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंड व्हाट टू एग्जीक्यूट रिविजन मॉक नथिंग एल्स किसी दरकार नहीं खाइब पीब उठब रिविजन मॉक शोब फिर खाइब पीब रिविजन मॉक आ किसी दरकार नहीं 90 days में एवरीथिंग जस्ट लेट इट बी तुम्हें किसी जिन अटेंड न कले दुनिया अटकी जीवनी बट तुम्हें 90 days वेस्ट करदे तुम्हें अटकी जीव दुनिया ता बाटर पलैब सो दिस 90 days विल डिसाइड द फेट ऑफ योर कौन कह कि माने दिस कैन क्रिएट ए ह्यूज डिफरेंस यदि एग्जाम क्लीयर करदेल योर लाइफ विल बी डिफरेंट जे तुम एग्जाम क्लीयर न कल गोटे वर्ष डिले हो गला ओके द लाइफ विल बी अगेन इट विल बी माने आउ गोटे वर्ष तुम फिर बर्डन रहा ना फिर प्रिलिम्स क्लीयर करियो फिर मेंस लिखिबो एंड लिटरली जो मैंने एथर जार हेनी प्रिलिम्स से माने दे आर टू मच अनलकी से माने बिल्कुल एटा नुहे कि से पढ़ नथिले कि से माने कैपेबल नहंती यदि कैपेबल नहंती से माने 2024 रे इंटरव्यू केमती माने देले 2023 रो इंटरव्यू से केमती अपेयर कले दे आर कैपेबल टू गेट ए जॉब कार 5 मार्क रु कटि फाइनल लिस्ट का 7 मार्क रु कटि ठीक अच्छे एते हला पर से माने प्रिलिम्स देले हेलानी माने आटू बैड लगा कौन हो पार गोटे वर्ष से माने वेस्ट माने वेट करियो नॉट वेस्ट बट दे आर वाइज दे आर करेजियस एनफ दे आर टेकिंग राइट स्टेप कि नेक्स्ट ईयर तांकू प्रिलिम्स मेंस क्लियर करी केमती जॉब नहीं पड़ेबे एंड दैट थिंग यू आल्सो नीड टू डू इन दिस 90 days आज मंडे हो गला द राइट डे टू डिसाइड आउ डिले करनी जेकोसी जगह तुम जॉइन कर यू जस्ट जॉइन बट चेकलिस्ट रख तुमको से जगह से मटेरियल मिलूँ सो दैट कि तुम पढ़ी एग्जाम हॉल को जाइए कॉन्फिडेंस लिखुव ना कि कहे आम मॉडल आंसर सबकि अच्छी मॉडल आंसर के सबकि न था you just check the material whether it is helpful to you you check the pattern of the question that they are asking and match it with the OPSC trend OPSC dynamic question आछि जदि से माने एबे भी स्टैटिक क्वेश्चन माने पकाउचंदी आ क्लेम करचंदी कि आमे 250 आम कोन आम मॉक टेस्ट आस्थिला ताल से माने महापुरुष लेवल सेठी आमे किछ कर परियानी ठीक तो चेकलिस्ट तुम कौन रखियो मटेरियल गोटे रखियो तापरे मॉक टेस्ट रखियो तार नेचर को ट्रैक माने
compare it with the trend of OPSC. Jodi hochi, you just join and try to put everything for this 90 days लॉक कर दियो फोन फोन बंद कर दियो प्रिंट आउट नहीं जाओ बसिक पढ़ किसी करनी बेकार जिन किसी करने तुम टाइम नहीं फाइन सो ठीक अच्छे दिस इज वन वीडियो आम नेक्स्ट वीडियो नहीं आसा फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स ठीक एसर गोटे आम वीडियो बनई यू कैन वाच इट एट आवर चैनल ओपीएससी अचीवर्स एकेडमी ओपीएससी अचीवर्स एकेडमी तादर आम गोटे एसए गोटे वीडियो बनई हाउ टू टैकल दैट फिलोसॉफिकल एसे यू कैन वाच इट देयर जे तुमको एसए मटेरियल दरकार ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एसए मटेरियल फॉर जीएस मटेरियल जे तुमको मटेरियल दरकार देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फाइन द नंबर वी हैव गिवन दिस नंबर कोड लिखले हमें this is the number that you can contact fine so that's all for today thanks for watching the lecture have a great day